Hello everyone, welcome back to my channel The Creative Me. So guys, in today's video we are making this beautiful flower vase. And if you are watching my channel for the first time, please do consider subscribing my channel. तो फ्लावर वास बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक थर्माकोल शीट लेनी है एंड उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करके पेपर कटर की हेल्प से उसे कट कर लेना है एंड उसके अंदर ही एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना है एंड उसे भी पेपर कटर की हेल्प से कट कर लेना है। इसके बाद इन दोनों कटआउट्स को फेविकॉल की हेल्प से चिपका लेना है। एंड उसके बाद ये कटआउट्स को एक थिक चार्ट पेपर पे स्टिक कर लेना है एंड उसके अंदर वाले सर्कल को भी अंदर की तरफ स्टिक कर लेना है। एंड उसके बाद फॉयल पेपर का जो रोल है उसका छोटा सा पीस कट करके हमें साइड में रखना है एंड देन मैं यहाँ वाइट सीमेंट ले रही हूँ जिसका कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए और वाइट सीमेंट को इस सर्कल के अंदर फिल इन कर लेना है। हाफ फिल करने के बाद हमने जो रोल पेपर का पीस लिया था उसे प्लेस करना है एंड देन उसके बाद उसके ऊपर से सीमेंट को फिर से फिल इन कर देना है। बाद इसे अच्छे से डैप करके इसको एटलीस्ट 5 to 6 आवर के लिए ड्राई होने के लिए रख देना है एंड और सूखने के बाद हमें थर्माकोल को पेपर कटर की हेल्प से कट कर लेना है एंड बीच में से जो उसका स्ट्रक्चर है
उसे हम निकाल देंगे। ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसके एजेस को राउंड शेप देना है। इसके लिए हम सबसे पहले पेपर कटर की हेल्प से इसके जो एजेस है उसे थोड़ा सा कट कर लेंगे, उसको इस तरीके से शेप देते जाएंगे। एंड देन उसके बाद सैंड पेपर की हेल्प से इसे स्मूथ कर लेंगे। Now how beautiful it is looking. उसके बाद हमें शिल्पकार के लिए लेना है, जिसमें कि 2 पैकेट्स आते हैं। उसे हम दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। एंड देन इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हमें इस तरीके से रोल बनाना है। एंड देन ये जो रोल है उसे हमको इस बेस पे फेविकॉल की हेल्प से चिपकाना है। ये हमें परफेक्ट राउंड शेप में नहीं स्टिक करना है, थोड़ा अनइवन सा ही राउंड बनाना है। सो डोंट वरी। बस इसे हम थोड़ा पानी की हेल्प से थोड़ा इसे फिनिशिंग टच देते जाएंगे। क्ले से राउंड सारे बनाने के बाद हमारा वास कुछ इस तरीके से लगेगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ कांच का एक बोतल है छोटा सा, जो यहाँ मैं फिक्स कर रही हूँ, जो कि हमने बीच में हॉल बनाया था उसमें मैं यहाँ फिक्स कर रही हूँ। इसको इस तरीके से लगा के और इसके बाद मैं इसको क्ले की हेल्प से इसको यहाँ फिक्स कर दूंगी। आपके पास कोई और ग्लास का ट्यूब्स अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ये प्रोसेस स्किप भी कर सकते हैं। एंड देन मैं इसके बाद यहाँ इसके ऊपर वाइट एक्रिलिक पेंट करूँगी। एंड इसके सेंटर्स में मैं यहाँ मेटेलिक गोल्ड कलर करने वाली हूँ।
the varnish on it. And yeah, it's done and I'm totally loving it. थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।